Welcome back, my dear friends. Today, exercise 9G, question number 3. Samir lent equal sums of money at 5.5% and 4% per annum, respectively, for a period of 3 years. समीर कुछ पैसे इक्वल अमाउंट दो दो जगह में वो इन्वेस्ट किया था, जो इंटरेस्ट में दिया था वो एक है इंटरेस्ट होता है 5.5% पर एनम और एक होता है 4% पर एनम। ठीक है, इसमें बताया नहीं कि कितना पैसा वो लगाए थे हर एक जगह में। इफ ही अर्न ₹72 मोर फॉर द मनी लेंट आउट एट 5.5%, तो क्या होते हैं दोनों जगह से उसे जो इंटरेस्ट मिला था वो 5.5% में जितना मिला था और 4% में जितना मिला था, तो देखा गया तो 5.5% में 4% से 72 रुपीज उसे ज्यादा मिला था। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट एट 4%, तो वो 4% इंटरेस्ट में कितना पैसा लगाया था वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन लेट प्रिंसिपल P 100 रुपीज, हम लोग ले लेते हैं दोनों जगह में वो 100 रुपया लगाए थे। ठीक है, R1 5.5%, it will have to the 10 and 1 11/2%, time equals to 3 years. Okay, we know that I1 equals to P R1 T by 100. Okay, R P equals to 100, R equals to 11/2, T equals to T का वैल्यू है 3 and divide by 100, we have to write here 100. Okay, this 100 and this 100 has been cancelled. 11 3 is 33/2. ठीक है, तो वो 5.5% में उसे कितना मिला था 33/2. ठीक है, अगेन इन सेकेंड केस P equals to 100, R equals to 4%, time T equals to 3 years. Therefore, I2 equals to P R2, this is R2. ठीक है, T by 100, it will 100, the value of P 100, value of R2 is 4, value of T is 3, divide this 100, this 100 and this 100 has been cancelled, 4 3 is 12. Okay, now difference of interest equals to 33/2 minus 12, to 33 minus 2 12 is 24. It will from 13 have to subtract 4, remain here 9/2. This is the difference between two interest. Okay, if the difference of
interest is 9/2, then P equals to 100. If the difference of interest is 1, then P equals to 100 divide 9/2. It will ultimately 100 multiply 2/9. If the difference of interest is 72, then P equals to 100 multiply 2/9 multiply this 72. Okay, 72 and 9 have to cut out. 9 goes in 72 8 times. Okay, 100 multiply 8 to the 16. It will 1600. Okay, therefore 1600 rupees is lent at 4%. This is the answer.